Hello children, this video is regarding the explanation of your Term 1 paper. Right? So Term 1 paper is of total 80 marks. English literature and English grammar both. Right? So first you have to write your name, then roll number, then your section A, B, C, whichever section you are, and the date. Right? So your English paper is divided into various sections. Basically English literature and English grammar, but reading, writing and grammar section, right? So in reading section, section A, what you have to do is, this section contains 20 marks. ये जो section है, section A reading का, this is having 20 marks, right? So as we have already done in our worksheets also, what you have to do is, in the similar way, this is an unseen passage, जो passage आपने नहीं पढ़ा है. So you have to read the full passage, right? You after reading the full passage, you have to answer the questions below. नीचे दिए गए आंसर्स आपको पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज में से ही आंसर ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं, राइट? सो दिस इज हैविंग 5 मार्क्स. ओके, next is also unseen passage, but this is a poem, so you have to read the poem. This is also having 5 marks. You have to read the poem and give the answers accordingly. पोएम के हिसाब से आपको पोएम रीड करने के बाद यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ लिखने हैं, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर सीन पैसेज, दैट इज फ्रॉम योर बुक. आपने जो बुक में क्वेश्चंस एंड लेसन्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड ये पैसेज है, आपके टेक्स्ट बुक का पैसेज है ये. सो यू हैव टू रीड द पैसेज. दिस इज ऑल्सो हैविंग 5 मार्क्स. आपको ये बुक वाला पैसेज रीड करना है और यहाँ पर दिए हुए जो क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस है, द क्वेश्चंस मेंशन्ड ओवर हियर, यू हैव टू आंसर इट फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. पैसेज में जो लिखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ आंसर में लिखना है, राइट? So this is your scene passage from the textbook. Now next is your poem. Poem is also from your book, right? So you have to read the poem and answer the questions accordingly according to the poem. Poem से related questions है तो आपको answers भी poem में ही मिलेंगे, right? We have already done this. हमने already किया है ये worksheet में, if you remember. Right? So this is also having 5 marks. So next is your section B. Section B is your writing and grammar. This is having 30 marks. Right? So what you have to do here is, this is a story. इसको short में लिखा हुआ है, right? This story is written in short. So what you have to do is, you have to, ये स्टोरी की आउटलाइंस है, ओनली हिंट्स दिए हैं आपको, छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े में स्टोरी है. सो यू हैव टू राइट द होल स्टोरी एंड गिव अ सूटेबल टाइटल टू द स्टोरी. आपको स्टोरी का टाइटल भी लिखना है एंड नीचे मोरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना है. फाइन, दिस इज ऑल्सो हैविंग 5 मार्क्स. नाउ हियर दिस इज योर ग्रामर सेक्शन. It is having 1 marks each, that is 2 questions for 2 marks. What you have to do here is arrange the words in alphabetical order में. अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको यहाँ पे words arrange करने हैं. आपने ग्रामर में पढ़ा है ना अल्फ़ाबेटिकल रीअरेंजमेंट, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल रीअरेंजमेंट ही करना है यहाँ पर, राइट? Now here in this section ग्रामर एंड राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन बी में व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू लुक एट द पिक्चर, राइट?
पिक्चर देखकर आपको वो पिक्चर को यहाँ नीचे डिस्क्राइब करना है. वी हैव डन इट, राइट? हमने किया है ना इसको ऑलरेडी. सो यू हैव टू डू दिस. Looking at the picture, you have to write the story. This is having 2 marks. Next, C. C में you have to rearrange the words to form questions. यहाँ पर जो sentence दिया है उस sentence को आपको you have to change the form. ये normal sentence है. You have to change the form to क्वेश्चन सेंटेंस. क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं ये सेंटेंस पढ़ के. आपको दिशिता मैम ने ऑलरेडी पढ़ाया होगा ये सारी चीज़ें. सो डू इट नाइसली, राइट इट नाइसली. नाउ डी. डी में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टिक द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड. ये जो सेंटेंसेस दिए हैं उस हर सेंटेंस के सामने इन फ्रंट ऑफ एवरी सेंटेंस देयर इज 2 क्वेश्चन वर्ड्स, राइट? सो यू हैव टू टिक द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स दैट फिट्स इन द सेंटेंस. सो दिस इज हैविंग 4 marks, half marks for each question. Now E. E में you have to tick the sentence in which comma has been placed correctly. Here you have to tick. There are 2 sentences, right? 1 and 2. In both the sentences, which sentence is having comma in the right place? You have to tick that question. Fine. See, the box is given. You have to tick it. Now F. Write a proper noun for each of the common nouns. This is a common noun written over here, right? Four common nouns. You have to write the proper noun for each of the questions. Now G. G is having complete the sentence with either singular or plural form in the nouns in bracket. So the questions here, the fill in the blanks is given, but the nouns in the bracket, see the nouns are given in the bracket. You have to write either singular or plural of the noun according to the sentence and you have to fill in the blanks. जो नाउन्स ब्रैकेट में दिए हैं वो सेंटेंस के हिसाब से सिंगुलर बैठेगा या प्लूरल बैठेगा, दैट यू हैव टू सी, अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स, राइट? सो दिस इज ऑल्सो हैविंग 2 marks, half marks for each, 4 questions of half marks. Now H. In H you have to underline the adjectives in the sentences. Then you have to say what is that adjective. That is, then state that what they describe, look, color, number or quality. That means you have to underline the adjective in the sentence and then you have to write the type of adjective. यहाँ पे types दिए हैं ना, चार टाइप्स दिए हैं. उन चारों टाइप्स में से आपको यहाँ पर ब्लैंक में वो लिखना है कि आपने जो एडजेक्टिव को अंडरलाइन किया है वो कौन से टाइप का है. फाइन. ओके. आई में इट इज एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन. यू हैव टू look at the words given here and then you have to write the comparison of adjectives. This is of 4 marks. Then J में you have to fill in the blanks with a, n or the. This is also of 4 marks. 1 marks for each. Then here comes section C. Section C is totally on your based on your textbook. Whatever you have read in your textbook. So for here question number 11, this is of 6 marks. 6 questions, 1 marks each. You have to write the meanings of the word. Fine.
Then question number 12. Here are 8 questions having 2 marks each. So you have to read the question and write the right answers from the stories that you have read in your textbook. Fine? Now question number 12B is having 3 questions, 2 marks each. But you have to write the answers in details. 3 questions, 6 marks. And the last one is the true false. Here you have to read the sentences and tell whether it is true or false. You have to write it true or false in the blanks given over here. Right? So this section is having half marks each. So all the best.